कि सर व्हाट एग्जैक्टली द वे यू कैन एक्सप्लेन गाइस इफ यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। सर हमको चांस नहीं मिलता है, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड, तभी जाके तुम इस चीज को समझोगे, तभी जाके यू कैन स्पीक एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट। वो पूछेंगे तुम कहाँ पर काम करते हो, काम यहीं पर करता हूँ गाइस। सर यू हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम्स, यू कैन नॉट टेल सर आई एम राइटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। यस, फॉर व्हाट रीजन यू आर राइटिंग, गेटिंग गाइस। सर पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, किस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हो? सर कस्टमर बिहेवियर, किस सिस्टम पे? सिस्टम इज ई कॉमर्स, एज्यूम करो जो प्रोजेक्ट पे डाला जाएगा। सर इसमें क्या कस्टमर बिहेवियर, ये कस्टमर कितने बार लॉगिन कर रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितने बार विजिट कर रहा है और कितने बार परचेस कर रहा है या खाली विजिट कर रहा है। सो these आर द डेटा will be taken by the Amazon and the machine learning algorithm you are going to use. The product type is electronics, product cost is पहली बार लिया 1000, सर नेक्स्ट बार लिया 500, नेक्स्ट बार लिया 800, and this person's purchasing capacity is average. So that will derive what if the next product this person can purchase. So this is your machine learning. Getting a point? सो कोई भी चीज समझाने से पहले आप ऐसे मत सोचो कि सर मैं उसको पहला मिनट पे प्रोजेक्ट एल्गोरिथम ही समझा दूंगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम, एक्चुअली सिस्टम क्या है और उसमें मैं डेटा किस हिसाब से है और मैं प्रेडिक्ट क्या करने वाला हूँ। दैट इज योर एक्सप्लेनेशन। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए अभी पढ़ेंगे सर सिस्टम। अभी किस किस सिस्टम, बहुत ही सारा सिस्टम पढ़ना है, तभी जाके यू विल गेट। आप बताओ अमेजोन का डेटा, टेलीकॉम का डेटा अलग होगा क्या? सर इसमें ऑर्डर आईडी है, उसमें कॉलिंग आईडी रहेगा, लेकिन इट विल बी सेम नेचर आईडी। डेटा डेटा का नेचर कभी चेंज नहीं होगा, सेम है। इसमें रहेगा बैंक में ट्रांजैक्शन आईडी, सर इसमें रहेगा रिसीवर आईडी, ये तो यही होगा सर। तो सिस्टम वेरिएट होता है, डेटा इज रिमेन स्टैटिक। यानी सर इफ यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम पढ़ना है। सप्लाई चेन, सर उसमें कैसे काम होता है, अमेजोन उसमें कैसे काम होता है, ई कॉमर्स, इट इज नॉट अमेजोन। सर उसके बाद टेलीकॉम, उसमें क्या काम होता है, everything you will understand so that you can speak. And this is business. If you know 100%, you can speak 90%. If you know 90, you can speak 60. If you know 60%, you can speak 40%. If you know 40, you can speak 10%. That is the logic. Getting guys? क्योंकि इंटरव्यू में they want your system understanding guys. एंड ये चीज समझने के बाद यू गेट कंप्लीट गाइस ग्रिप्स कि सर हम क्या कर रहे थे, अभी तक पता चल गया अभी। तो इसको अभी पढ़ेंगे प्रोजेक्ट। सर जब आपको प्रोजेक्ट समझाया जाता है, जब आप स्टार्ट करोगे, वो पूछेंगे पहला क्वेश्चन ये धाकते कि व्हाट यू आर डूइंग। सर ऐसे पूछते हैं, वो बहुत ही रॉफली भी कभी कभी पूछते हैं, नो टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी नहीं पूछते। वो पूछते हैं नो टेल मी व्हाट यू डिड। सर दैट मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट करें इसको? What you did? Sir, I'm writing coding. No, no, guys. So what you are doing, that will be business standard communication होना चाहिए कि सर हम क्या करें, what you did basically. Sir, basically during this 3 year, sir, I have basically involved in जो भी सर, जो hotline point है, उस चीज को टेक्नोलॉजी को बोलना है। सर बेसिकली आई हैव इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वो पॉइंट को एक शॉर्ट में बोलना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, लो लेवल डिजाइन, नेक्स्ट इज programming and unit testing, pre-production deployment, defect fixing. These are the tasks are basically available. वो पूछेगा तुम
किस पे काम कर रहे हो, इस सिस्टम। सर बेसिकली माय प्रोजेक्ट डील्स विद दिस। फर्स्ट इस चीज को बोल रहे हैं, माय सिस्टम डील्स विद दिस। दिस मीन्स सर सप्लाई चेन, टेलीकॉम, बैंकिंग, कोई भी सिस्टम पे आप काम करते हो, सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है टेलीकॉम। इसमें बंदे लगभग जीरो रहते हैं guys। क्योंकि सबसे ज्यादा साइंस अगर यूज होगा आपका डेटा टेलीकॉम। सर वाई, आप सोचो ना, आप ही खुद सोचो सर, तो वर्ल्ड बंद हो गया लेकिन अपना चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी टेलीफोन नेवर स्टॉप्स। 4G मूविंग टू 5G, दैट मीन्स everywhere is artificial intelligence, machine learning. So these things we are going to read one by one, you have to focus. We will start. तो इस चीज को बोलते हैं वर्टिकल, ये वर्ड यूज करना गाइस, लिख के रखो। सर बेसिकली कुछ सिस्टम, बेसिकली सर माय प्रोजेक्ट डील्स विद दिस दिस, सब कुछ पढ़ लेंगे। टेलीकॉम, सर बैंकिंग, नेक्स्ट इज पेमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम, नेक्स्ट इज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक। सो कंपनी में these are known as verticals, क्या बोलते हैं, verticals, logistic, okay, these are known as verticals. सर horizontal, horizontal किसको बोलते हैं, banking can be divided into core banking, yes, and insurance, yes, these are known as insurance, these are known as your horizontal, these are verticals, ये word use करना। सर basically my project deals with telecom and ये चीज इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लिख के रखो गाइस। सर लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू रीड, सप्लाई चेन। सर क्या होता है सप्लाई चेन, द प्रोजेक्ट बेसिकली डील्स विद सप्लाई चेन। सर व्हाट एग्जैक्टली, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट, सर यू हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम। सर बेसिकली माय प्रोजेक्ट डील्स विद सप्लाई चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन देन, assume you are using one marker, that is your product। सर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक जगह होता है, ओके, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, कहां से हुआ, दिल्ली। उसके बाद the project moves to this is manufacturing, so next the data moves to sir warehouse, उसके बाद जाएगा state warehouse, उसके बाद कहाँ जाएगा सर, district warehouse, उसके बाद कहाँ जाएगा, small warehouse, उसके बाद distributor, उसके बाद कहाँ जाएगा, retailer, उसके बाद कहाँ जाएगा, shopkeeper, उसके बाद कहाँ जाएगा, end user। ये जो जर्नी है, this journey is known as supply chain। What is supply chain then, the journey from product manufacturing to end user delivery। Get my point guys, hello। Yes, sir. Yes, sir. Or Yes, sir. this is the Yes. system। Now the question is sir, अगर product delivery हुआ, what is the project, is the functions। So what is the function of supply chain here, assume this is known as state warehouse, the district warehouse, this is state warehouse। in this the end user, always याद रखो कोई भी सिस्टम का end user कौन है, व्हाट्सअप, who is the end user, the young people, Amazon, who are the end user here। सर end user मतलब कौन यूज कर रहा है, yes, the internet savvy candidates। सो डिजाइन हमेशा उन्हीं का माइंडसेट को रख के डिजाइन किया जाता है। what are the end user here, सर warehouse owner, distributor, retailer, they are the end user। then what is the function here, assume करो this is known as state warehouse owner wants to check the availability of the product। sir what product they want to check, marker, color should be black, perfect Nice. getting or not, Getting. Yes, sir. perfect। सर उसको कितना काउंट चाहिए, 8000।
मार्केट चाहिए. The distance between this, assume करो this is in Mumbai, नहीं this is in Pune, this is Mumbai, sir this is Kolkata, this is Delhi, गुड़गांव. The distance is, इंडिया पे इतना है सर, अमेरिका में 5-10,000 किलोमीटर रहता है, 5,000 किलोमीटर. He wants to check the availability of the product. सर क्यों? Because this is business. अगर यहाँ पर है ब्लैक 8,000 एंड ग्रीन है 1,000, तो टोटल कितना 9,000 अवेलेबल है. ओके, लेकिन यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज 10,000. लेकिन सर ब्लैक इज 6,000. Are you getting my point? Sir, green is 4,000. In this case, this is the distance is 200 kilometer. This is 100 kilometer. And this is 100 kilometer. This is 200 kilometer. And this is 1,000 kilometer. Then where he is going to move? Hello? First, Hello? we will check. Yes. Where he is going to travel? Sir, obviously 100 किलोमीटर जाएगा. लेकिन यहाँ अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है ना, उसको जो डिमांड है, दिस वन is not satisfying. Requirement is 8,000. Even if it is 1,000 kilometer, is going to travel here, right? Right or not? Yes, sir. To reduce transportation. ये तभी जाएगा जब उसको पता चलेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कितना है. That means that your application will be the solution. This is your project. I mean, sir, the end user, I mean, यहाँ का end user इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, ये इसको. Availability of the product, this application, what it will do? Sir, basically this application will check the availability of the product on the specific location. Get my point? Real world पे 2-3 नहीं रहता है, ये 50-60 रहेगा. And this application will help the end user to provide the information regarding the availability of the product. This is the functions. Getting my point, guys? Yes, sir. Yes. सर ये अगर फंक्शन है, इसको अगर समझा, उसके बाद टेक्नोलॉजी समझो. सर अवेलेबिलिटी कहाँ पर रहता है? Obviously database. So warehouse में data रहेगा. The analytics will start here. So this is the warehouse. Sorry guys. So warehouse what will determine? सर यहाँ पर data रहता है. So end user has to search the data. So what the function you are going to use here? Search. Search is the functions you are going to use here. Search, simple. So this search based on what? The data you provide. So what data you are going to provide here? This is search. So this search will be purely based on the input you provide. That is your analytics. Ready? Hello. Product type, product info, product. Getting my point or not? Yes, Hello. sir. So these Yes, are यानी सर आप जो इनपुट दोगे आउटपुट डाटा वही एक्सपेक्ट करो. सर जैसे कि एज्यूम करो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनपुट. भगवान मेरे को ना एक जॉब दे दो, विल गेट द जॉब. देन यू विल क्राई अगेन, सर चुपड़ा सी जॉब मिल गया. बनोले मैं क्या करूं? तो जो इनपुट डाटा दिया. सेम साइंस गाइस, तुम अकेले ये काम नहीं कर रहे हो. वो यूनिवर्स राउंड्स विद द सेम फंडामेंटल. नहीं 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 मुझे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए. ठीक है, ठीक है, ले ले. और ज्यादा बग बग मत कर, तेरा पैकेज 40,000 है. सर दोस्त का मिल गया इतना, मैं क्या कर रहा हूँ. ओके सर, आई वांट ए स्मार्ट पैकेज 12 लाख. ठीक है, वो भी ले ले. चल सर, दैट मीन्स मेरे को पैकेज सर कम मिल गया.
ओके, अगेन यू क्राई। ओके, अब बताओ क्या चाहिए सर? 12 लाख पैकेज मिल गया, मिल गया। अगेन यू आर गोइंग टू क्राई, भगवान मेरे को ना ये पेट्रोलियम प्रोजेक्ट मिला है, ये साला इंडिया क्लाइंट है। ओके, फिर अगेन यू विल क्राई। व्हाट यू आर गोइंग टू देन? ओके, आई वांट सम ऑन साइट प्रोजेक्ट। ओके, ऑन साइट मिला, ठीक है, ले भाई श्रीलंका का प्रोजेक्ट ले जा। नो 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 भगवान, मेरे को अमेरिका चाहिए, यूरोप चाहिए। यस, दैट मीन्स what are the input data you are provide, accordingly you will get the response from the server. Simple. So more the sophisticated way you provide the input, more the advanced data you will get. So concentrate on your input data. This is important. Getting my point? Oh dear God, I want a person who is doing software engineer. ले, ठीक है, इसको शादी कर, software engineer. I want a person who is having 1 lakh package. Okay, ले ले। उसके बाद फिर मिलेगा क्या? अमरीश पुरी। अब लो, सब्सक्राइब करो। The answer is what I can do here. You provide the data. एंड आपका रिस्पॉन्स आता है कि भगवान ने मेरे बात सुना नहीं। अरे कैसे सुनेंगे? तू जो डेटा दिया मैं वही सुना। ये तुम्हारे केस में नहीं होता है, हर जगह होता है। द्रौपदी ने मांगा ना, किसको? वासुदेव को। वो पूजा किया, भगवान बोले क्या चाहिए बता। आई वॉन्ट वन पर्सन हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। मुझे एक हस्बैंड चाहिए। वो बोले ठीक है, ले ले। दैट इज अर्जुन। मुझे ऐसा पर्सनालिटी चाहिए हु इज ऑलवेज ट्रूथ। सर वो कौन है? युधिष्ठिर। सर मुझे सबसे ताकतवर चाहिए, पावरफुल एकदम भीम। ओके, वो भी ले ले। सर नोटी पर्सनालिटी चाहिए, वो भी ले ले, नकुल। सर मुझे ना, और क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। सर सब ले ले भाई, सबको ले ले। लेकिन उन्होंने कंडीशन छोड़ दिया, दैट इज योर साइंस। सर वो क्या छोड़ दिया? नेक्स्ट बार में उन्होंने रोना स्टार्ट किया कि मैं तेरे को मांगा क्या, तुमने दिया क्या? सबको क्लब करके एक में जोड़ दिया, रोना स्टार्ट किया। तो भगवान बोले मैं क्या करूं आप बता। मैं तेरे को बोला था तू 5 मत मांग, तेरे को एक मिलेगा। बिकॉज आई डिस्ट्रीब्यूट चैनल, आई हैव टू प्रोवाइड एवरीबॉडी, एक एक दूंगा। उन्होंने बोला मेरे को 5 चाहिए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन छोड़ दिया, 5 कैरेक्टर इन 1 चाहिए, ये कंडीशन छोड़ दिया। दैट इज योर सर्च। एक कंडीशन छोड़ दिया, वही कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया। यानी 5 को 5 कैरेक्टर दिए, लेकिन एक कंडीशन छोड़ दी। दैट मीन्स whenever you are going to implement here, the most important is your data science here. How much in the sophisticated way you are going to provide the data. Assume you are going to check your medical bill. So we want to check the medical bill. The request will go here and the server will send the response. But in the data is not going to be stored in plain format. इस सर यहाँ मेडिकल बिल ही रहेगा और वो पुल करके लेके आ जाएगा। नो, सो मेडिकल बिल will be purely based on the logic. So that logic is, सर मेडिसिन के लिए उन्होंने कितना खर्चा किया? सर 800 रुपया। सर ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा किया? ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा किया? इतना। सर ट्रांसपोर्ट के लिए कितना खर्चा किया? So all this logic will be integrated as medical. This is your logic. So what is the logic here? X plus Y plus Z is equal to medical bill. Getting guys? This Yes. is known as business logic. And this is the input data. And this is response. So what and how you are going to explain here? Sir, basically, the end user wants to check the availability of the product. Sir, basically, my project deals with supply chain. In supply chain, sir, basically, the end user wants to check the availability of the product in a specific location. इतना पहले बोलना होता है बिजनेस में। Sir, in this, the application will send the request with respect to the input data provided by the end user, and end user is going to click on search. If search, then the result will be displayed on the grid. Is the requirement. Now, the requirement is, sir, this is function. Yes.
The search is one function. Are you getting my point? Hello. Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को समझाना है. ये बिजनेस है गाइस. यू मस्ट रिप्रेजेंट योरसेल्फ. कोई भी बंदा डॉक्टर होता नहीं है ऑपरेशन इंसान को काट के. गाइस मेंढक काटते हैं, उसको फंडामेंटल बोलते हैं. मेंढक काट के डॉक्टर होते हैं गाइस. फंडामेंटल यू हैव टू रिप्रेजेंट सर. You don't think that, sir, I have to write this text box, copy paste from Google. I have to write this. Guys, you have to imagine this one. This is the application. Sir, input data जो दिया जाएगा उसी हिसाब से analytics will start. This from the warehouse. The logic I must understand. And server will send the data. So the result will be displayed here. Sir, कहाँ पर? In grid. उसको grid बोलते हैं. So this is the grid. So here the data will be displayed. But is the grid. How many records will be displayed here? Sir, ऐसे million तो display हो ही नहीं सकता. Yes. I'm the end user. I don't know how many data are present. So here the number of count will be 20. This is the requirement. I mean, sir, in grid the total count will be displayed as 20 records will be displayed. ये requirement है. लिख के रखो guys. The question is here, sir, अगर data यहाँ पर क्या है मुझे पता नहीं. I'm the end user. Assume करो आप किसी को search कर रहे. Sir, I'm searching अमित. मेरा कॉलेज का फ्रेंड है. अमित पाटिल 1, अमित पाटिल 2, अमित पाटिल 3. नहीं सर, आई वांट डीवाई पाटिल. सर डीवाई पाटिल मुंबई, डीवाई पाटिल पुणे. नो सर, मुझे ना मुंबई वाले चाहिए. सर डीवाई पाटिल, अमित पाटिल अगेन कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. नो सर, मुझे कंप्यूटर साइंस अगेन कंप्यूटर साइंस. सो दीज आर द डेटा यू आर गोइंग टू प्रोवाइड. बट सर एज्यूम करो अमित इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस आज 21. एज्यूम करो डेटाबेस में 21 अमित है. And 21 Amit is your requirement. Here the 20 requirement will be displayed. That means your data is correct, logic is correct. Still you are not able to see. Are you getting guys? Hello? Yes, sir. Perfect. Sir. What it specifies? Sir, it specifies key. Sir, these are the data. This data is nothing but your requirement. Sir, 20 requirement अगर यहाँ दिखाई देगा, because database is blind, end user. मुझे पता नहीं कितना रिकॉर्ड है. सर 21 वाला अमित मेरे को चाहिए, लेकिन वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है. तो एंड यूजर ने, आई मीन क्लाइंट, added one another function. This function is known as export. Getting nice. So what are the function to here? Sir, export. Are you getting or not? Yes, sir. So what this export will do? If the sir दोनों में different क्या है? Different कुछ है ही नहीं, वही different है. If I enter the here, the request will go to database. Database will send the response. And I click on export. Logic will be absolutely same. It will go to the request. The data will send the response. But the data यहाँ तक logic पूरा same है. You need not to even touch the code, guys. Are you getting my point? Getting or not? Yes, sir. सर Yes, यहाँ sir. तक टच करने की जरूरत नहीं है. टच में बोल रहा हूँ. सर ड्रैग एंड ड्रॉप अंदर पे से ही काम होता है. ड्रैग एंड ड्रॉप. तो फिर यहाँ चेंज होगा. यहाँ से गया, यहाँ से डेटा पहुंचा, फिर यहाँ से आया, यहाँ जब पहुंचा, you are going to export the data via Excel sheet, via email. This is the requirement. Are you getting my point? Hello. Yes, sir. So you will receive one Excel sheet via email, and that email will be configured during you log in the system. That means what are the function here? Export. Sir, what is the science behind this? Why the client is spending here? This is your 3 month. This is your 3 month. Assume 6 month.
तो 6 मंथ प्रोजेक्ट सर, इसके लिए अगर 10 करोड़ दिया, इसीलिए भी 10 करोड़, काम कुछ नहीं है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म गाइस। I mean, sir, this is business. Try to understand what exactly the meaning of business is. That means, sir, वो ये नहीं बोलेंगे तुमने कुछ कर नहीं रहे हो, मैं दूंगा ही नहीं पैसा, तुमने तो सिर्फ ये जो कॉपी पेस्ट किया। नो गाइस, दिस इज वन फंक्शन, सो मनी विल बी पेड विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोडिंग फंक्शन नहीं है। सिस्टम फंक्शन इज सर्च एंड सिस्टम फंक्शन इज एक्सपोर्ट। सर, सर्च के लिए करोड़ों, यस, और एक्सपोर्ट के लिए एग्जैक्टली सेम अमाउंट। आर यू गेटिंग? So what is, why they are paying? The search and this is your export. Assume the record is less than 20. I mean, sir, 19. Yes, assume, because everything in the world runs with assume. Assume root 2 is the rational number. Then you will reach root 2 is the irrational. So let us assume here the number of record is 19. Search function will work. Sir, will work. Yes, because यहाँ 20 record होगा. So assume record is exactly 20. It will also work. Are you getting or not? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अगर assume record is greater than 20. Sir, why assume? Because I am the end user, I don't know. So this will be the failed science and failed information. You can check. And that problem will be resolved by export. Sir, एक condition के लिए उन्होंने 10 करोड़ खर्चा की. That is business, guys. That means all conditions will be satisfied in this case. Are you getting my point? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका फंक्शन, अब सर कोड लिखने के लिए क्या, जो सर्च लिखा कॉपी एंड पेस्ट, सर्च इज द फंक्शन। सर जो लिखूंगा कॉपी, ड्रैग, कॉपी भी नहीं, स्पेस रह जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप है कि नहीं आ रहा है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Perfect. That means this is the complete information of your project. Now we'll start designing the requirement. Are you getting, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. This is, you have to explain, sir, what and where you have used. So warehouse, guys, you can tell science, इसी के अंदर सब काम रहता है। डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन करते हैं, सर चेक करते हैं, जेंगो बोल सकते हो, साइंस। देखो गाइस, दिस इज माय सजेशन, अगर आप, सर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है डेटा साइंस पे, तुम्हारे इंटरेस्ट से दुनिया नहीं चलता है। बिजनेस रन्स विद इट्स ओन वॉइस। थोड़ा मेहनत करो, बिकॉज पाइथन इज डिजाइन फॉर बोथ। इसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल इंक्रीज टू 90%। डबल डायमेंशन पे एक भी प्रोफाइल मार्केट में नहीं मिलता है। जो भी जाएगा गाइस आपका ही प्रोफाइल, क्योंकि सर जेंगो सेटिस्फाई हो रहा है डेटा साइंस। तो जिन लोगों को थोड़ा समझ में कम है, मेरे को बोल सकते हो सर दोनों सिखाओ, लेकिन आप फ्रंट पे जेंगो को रखो, फ्रंट पे। तो ऑल द प्रोजेक्ट्स विल डील विद द बोथ, वो हाइब्रिड प्रोफाइल बनता है। जैसे कि सर कोई भी समझा सकता हूँ, कुछ भी समझा सकता हूँ, आप ही खुद एनालिसिस करो। सर यहाँ पर मैं डेटा साइंस बोल सकता हूँ, वेयरहाउस बोल सकता हूँ, ETL बोल सकता हूँ, सर जेंगो भी बोल सकता हूँ। यस, गेटिंग? तो you have to explain the system and how you are going to implement. That is your coding. Now we'll start. So what are the input data here? This is nothing but your product ID, product manufacturing date, product year date. These are the data. These are the information, guys. Simple. Now I'm going to giving you some scenario and requirements are real time में कैसे रहता है requirement, वो थोड़ा दिखाओ. Let us start, guys. Requirement is status is equal to 100. तुमको प्लेनली कोई नहीं बोलेगा ये लिस्ट लिखो, इसमें 1 2 3 4 रहेगा। रियल वर्ल्ड में से नहीं होता है गाइस, थोड़ा उससे एक स्टेप आगे जाओ।
This is status 100, 200, 300, 400, 500. Sir, status means simple guys. Imagine करो, this is status. Status किसका? Product का. 100 means active, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट अभी भी पेंडिंग है, आगे का एक्सपायर नहीं हुआ है, एक्टिव. 200 means डीएक्टिव. 300 means अंडर प्रोसेस. इस तरीका से रहेगा, इमेजिन करो. So these are the status. And if is the condition starts, the date is greater than equal to current date. So what is this date? Manufacturing date. Date पकड़ के चलो. Then the color will be red, else green. Is the requirement. Please, आपका कोडिंग मुझे नहीं चाहिए. I want only the logic how you are going to start this. एक सिंपल रिक्वायरमेंट है. अब बताओ इसको कैसे करोगे. Yes guys. Hello. Hello. Yes, sir, audible. बताओ. मैं ऑडिबल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है. Yes, sir. ऑडिबल हो रहा है मुझे पता है. I'm asking whether your दिमाग के अंदर घुस रहा है. Okay guys, whenever you are going to derive sir any इस तरीके का रिक्वायरमेंट आता है. What exactly sir status is deriving? The status is nothing but 100, 200, 300, 400, 500. That means समझ लो लिस्ट के अंदर रख दो 100, 200, 300, 400, 500. तो हमको लॉजिक क्या लिखना है. एक 100 के लिए वो बोल रहा है if condition is date is greater than current date, I mean date will be greater than perfect system date. Current date means system date. सर लेस देन भी हो सकता है. यस. बिजनेस में तुम्हारे कोडिंग के लिए लेस देन इक्वल, लेकिन बिजनेस के लिए वो दोनों अलग कंडीशन है. लेस देन सिस्टम डेट. यस, ये भी हो सकता है. सर आज का दिन है इक्वल टू सिस्टम डेट, then condition will be there. So these things you simple copy and paste 5 times. So make sure your code satisfy this panel. इस तरीका से कोडिंग होता है. I mean sir, कस्टमर किसको बोल रहा है. 200, नेक्स्ट 300, परफेक्ट. सर 400, 500, 500, 1 2 3 4. guys, hello. Getting sir. Sir. Yes sir. परफेक्ट. सर वो पूछ क्या रहा है. वो पूछ रहा है कि स्टेटस सब है, लेकिन यहाँ कंडीशन मार रहा है इफ स्टेटस 300, 400, 500 एंड डेट इज दिस, कलर विल बी रेड. किस क्वेश्चन को पूछ रहा है. सर वो जितना बोला क्या वही आंसर है. नो, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग. सर कैसे. यू हैव टू गाइस, इसके अंदर यानी टेस्टिंग से लेकर सब हो गया. ग्रेटर देन सिस्टम डेट, परफेक्ट. सर इक्वल भी. यस, इक्वल भी. in these two conditions color will be red. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes sir. Yes, सर sir. यहाँ पर भी वही होगा, वही होगा. यहाँ पर भी वही होगा. yes. और यहाँ पर सब रहेगा ग्रीन. Are you getting or not? Condition is not satisfying here. That is what the requirement is. जो रेड होगा, these are the red area. Getting?
दिस इज योर कोड मस्ट कंटेन कस्टमर क्या बोल रहा है, दैट इज कस्टमर क्या नहीं बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाई यू आर बीइंग पेड। आप अगर खाली बोलोगे कस्टमर क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट गाइस। कस्टमर क्या बोलना चाहता है और क्या बोलना नहीं चाहता है, यहाँ पर if it is, there is the live application, is address. What customer is asking is developed by Infosys and this international application, this is mobile number. What customer is asking here, 10-digit mobile number without prefix. I mean, +91 will not be there. What customer is asking here, 10-digit numeric? Yes, sir. I enter here. And it will accept. It's accepting. It's perfect. लेकिन वो क्या बोलना नहीं चाहता है, वो ये बोलना नहीं चाहता है, it should be integer. It should not be character. No mobile in the world having character, guys, and still it accept. Are you getting my point? That Yes. means Yes, sir, sir. ये डिफेक्ट नहीं है, ये क्रिटिकल डिफेक्ट है। सर ये इसको कौन डेवलप किया? अमेजोन है। लोकल एप्लीकेशन नहीं भाई मेरे, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो कोडिंग जो होता है गाइस, हाई स्टैंडर्ड कोडिंग के लिए यू मस्ट बी परफेक्ट एनालिटिक्स, तभी जाके कर सकते हो गाइस, नहीं तो इस तरीके का इशू आता है। अज्यूम करो गाइस, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ओके सर। उसके बाद customer again added some requirement. So what is that requirement? Again, client added here and simple. ऐसे ही requirement आता है, product type is equal to P D E. So you have to check what are the list of product type will be there. जैसे electronics assume करो, this is fashion, this is. So these are the product type. Okay sir, leave it. So what will happen here? This is product type is equal to A है सर, B है, C भी है और D भी है, E भी। लेकिन वो बोल रहा है जब B D E ये तीनों रहेगा, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, इस केस में रेड कलर होगा, एल्स रेड। सर ये रियल वर्ल्ड इतना ही नहीं है, इससे आगे और 10-12 रहेगा। तुम सोचो किस लेवल का एनालिटिक्स होता है। एक लाइन भी समझ में नहीं आता है कि सर एक्चुअली करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, खत्म कहाँ से करेंगे। तो सिंपल लॉजिक को समझना पड़ता है। प्रोडक्ट टाइप अगेन यू आर गोइंग टू बी A, इट विल बी अगेन B, सर C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, परफेक्ट। व्हाट इट इज मैचिंग, सर यहाँ पर भी हो सकता है, यस, दैट मीन्स A B C D E। ये एक के लिए, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी 5 होगा। दैट मीन्स if the condition is greater than and it is V, वो बोल रहा है B, यस सर, D, यस, ये बोल रहा है B होना चाहिए, D होना चाहिए, E होना चाहिए, सर D भी होना चाहिए, यस, यू डू इट, D, परफेक्ट, सर E भी होना चाहिए, परफेक्ट। एंड दिस डायग्राम will give you a very very sophisticated code guys। अब कंडीशन मारो, लिखो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कलर विल बी रेड, एल्स एवरीथिंग, खाली एल्स मार दो, रन कर दो। लेकिन इफ ट्रू कंडीशन में ये कंडीशन सब कुछ होना चाहिए गाइस। दिस इज नथिंग बट कोड, ओके गाइस। तो जब डिजाइन करोगे आपको पहले एंट्री करोगे ना गाइस, इस तरीके का छोटे छोटे सिनेरियो देते हैं। यू डोंट थिंक सर आपको देंगे अकेले प्रोजेक्ट लिखने के लिए, ऐसे होता ही नहीं। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके गाइस, टुडे सप्लाई चेन प्रोजेक्ट इज ओवर। तो इसको अच्छी तरह लिखो, प्रोजेक्ट में रहेगा। सर यहाँ पर क्या रहेगा, अगर टेलीकॉम प्रोजेक्ट रहा
इस एप्लीकेशन का नाम है मेंटेनेंस एनालिटिकल ग्रिड। एज्यूम करो सर मैग इज द एप्लीकेशन नेम, यस, उसका नाम है मेंटेनेंस एनालिटिकल ग्रिड। सर यहाँ पर क्या होता है, अगर टेलीकॉम रखा गया, क्लाइंट इज, एज्यूम करो फ्रांस टेलीकॉम। सर प्रोजेक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मेक श्योर यू मस्ट नो द सिस्टम, देन ओनली यू कैन, जो प्रोजेक्ट में रहेगा यू कैन अंडरस्टैंड, और दैट इज द योर विनिंग पॉइंट। सामने वाला कुछ समझेगा नहीं एंड यू नो इट। इसलिए बोला जाता है कि प्रोजेक्ट क्लास में एटलीस्ट प्रेजेंट रहो। सो प्रोजेक्ट क्लास में सर समझा सकते हैं, बेसिकली my project is client is this one. Basically end user wants to check the availability of the product in the specific location. So what is the availability product? Sir specific router, sir क्या modem, okay, device guys, getting or not? So ये हो Yes. गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया एप्लीकेशन, हो गया। सर अगर मैं कुछ वायरहाउस डाटा बोला, समझ लो एफएमसीजी डाटा बोला, जैसे कि नहीं, जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, दूसरा प्रोडक्ट, कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पकड़ लो, कोई टेलीविजन पकड़ लो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर टेलीकॉम डाला समझ लेना सर ने टेलीकॉम प्रोडक्ट। टेलीकॉम प्रोडक्ट क्या रहता है, राउटर, सर स्विचेस, modem, these are the devices. And client is this one, you have to represent what the project function is. End user has to search and check the availability of the product. Two function basically works here, sort and export। इस तरीके से समझना, उसको लिख के रखो, प्रैक्टिस करो कैसे समझाना है। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जाएंगे क्या करना है। ओके चलो गाइस, Yes, sir. आप लोगों का AWS क्लास खत्म हो गया क्या? No, sir. नहीं सर। ओके, और आपका डीप लर्निंग हुआ क्या, कंप्लीट हुआ? एक लेक्चर हुआ है सर। नहीं सर, होने का है, कंप्लीट होने का है। कंप्लीट हो गया? नहीं सर, एक नहीं हुआ लेक्चर सर, एक ही लेक्चर एक ही नहीं हुआ, लेक्चर हुआ है सर। नेक्स्ट अटेंड होने वाले। कोई बात, अच्छा पाइसपार्क हुआ? नो नहीं सर। नो सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिस्ट करके मैं सर को दे देता हूँ, किसी भी टाइम में बैठ के खत्म करो 10 दिन में, ठीक है? गेटिंग? यस सर। यस सर। यस सर। सिस्टम, सर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ई कॉमर्स सिस्टम, सर कैसे एपीआई इंटीग्रेशन डेटा जाता है, कैसे सर वहां से रेस्पॉन्स आता है, चीज को समझाना होता है वहां पर। एंड दैट व्यू यू मस्ट हैव। व्यू नहीं रहेगा ना गाइस, आप समझा नहीं सकते हो, क्योंकि यू नो द इंटरनल पार्ट ऑफ द कोड। बिकॉज आपका नेचर ऑफ द टास्क क्या होता है सर, यू आर लर्निंग स्टफ और प्रोग्रामिंग राइटिंग, लेकिन ये बिजनेस में काम नहीं करता है। दिस इज लो लेवल इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू इज प्योरली हाई लेवल। सर ये मैं लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, उस चीज को सिस्टम बोलते हैं। दिस इज व्यू। इस चीज समझ में आ गया तो फिर बिंदास बोल सकते हो। गेटिंग गाइस? हेलो? यस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो Yes, sir. अगर इग्नोर करोगे तुमको लगेगा सर ये इतना बड़े वर्ल्ड है, नॉलेज इतना यूज, आपको लगेगा मैं कुछ पढ़ा है, सर कुछ समझ में नहीं। यू गो टू मार्केट, ऑटोमेटिकली गाइस सब हो जाता है। और जितना मैं सिलेबस कल बोला उतना रोज पढ़ाई करते रहो। सर पाइथन रोज, नंपाई पढ़ना, बस काम खत्म। एल्गोरिथम दो, जेंगो, बस कॉर्ड ऑपरेशंस हो गया, और सिस्टम। इतना बेसिक चीज पे रहो गाइस, आ जाता है ऑफर। हमेशा कोई भी चीज बोल रहे हो, वो पूछेगा तुम रियल वर्ल्ड पे कहाँ यूज किया, बता मेरे को, लैम्डा फंक्शन। उससे आगे तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुमको लाइव दे दिया गया गाइस। और इसीलिए लैम्डा पूछते हैं क्या, यस, बिकॉज इज द मेजर फंक्शन इज मैपिंग। किसका? ईटीएल का मैप, किसका किसका, सोर्स टारगेट। इसीलिए गाइस लैम्डा फंक्शन पूछते हैं, क्योंकि डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैपिंग। सर ये मैपिंग, यस, ठीक। वो पूछेगा तुम रियल टाइम में कहाँ यूज किया लैम्डा फंक्शन, बताओ। वन लाइन फंक्शन, टू लाइन फंक्शन वो छोड़ो, मेरे को रियल टाइम में कहाँ यूज किया बता, ऐसे पूछते। तो ऐसे बोल सकते हो सर, बेसिकली यू नो फ्रेमवर्क वी आर यूजिंग डेटा वेयरहाउसिंग, द सोर्स सिस्टम सर इज नथिंग बट दिस वन, and target system side is the warehouse. So what happened, the requirement counts the source system data must be loaded in the warehouse. Let us assume take an example। इस तरीके से तुरंत एग्जांपल बोल देना।
This is subscriber name. Sir, what is subscriber? That is telecom, Airtel. This is your Airtel. Subscriber name, Airtel. And what is subscriber ID? Airtel having one subscriber ID. इसको बोलते हैं सिस्टम डाटा. ये बोलोगे तभी वो चीज रियलिस्टिक लगता है. Subscriber ID is integer by nature. When the warehouse it will be loaded, the data must be first character will be the first letter of subscriber name and 8-digit numeric. The total length it would be 9. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. So आपको चेक करना क्या करना है यहाँ पर, अब बताओ सर. इस चीज पे हमको क्या वैलिडेट करना है? अगर देखो क्या क्या वैलिडेट करना है सर. ए सब्सक्राइबर आईडी मिलियन डेटा लोडेड है. सर ऐसे भी डेटा रह सकता है. Are you getting? Yes, sir. ये भी नहीं है. Are you getting or not? Sir, length satisfy. It is also string. Perfect. Integer नहीं है, string है. ये भी string है, right? Yes, sir. अब बताओ सर क्या गलती है? सर लेंथ इज 9. किसे कैच करोगे फिर? ये भी 9 है. Starts with A, sir. Prefix post पोजीशन से करेंगे सर. एक मिनट. ए कैसे? अगर रिलायंस रहेगा तो फिर आर रहेगा ना. वो बोल रहा है सब्सक्राइबर नेम भाई मेरे. वो डायनेमिक डेटा हार्ड कोड नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग? हेलो. Yes. Yes, sir. That means what about the subscriber name, the first letter? इसको क्या करोगे लॉजिक मेरे को बताओ. इसको स्प्लिट करोगे. यही क्वेश्चन पूछते हैं. एक लिस्ट में एक स्ट्रिंग है, उसका इसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर दो. स्टार्टिंग 0. राइट गाइस? 1 2 3 4 5 6. यानी लॉजिक एकल कोड करके लिख के मेरे को दो. सर एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे 0 इंडेक्स वैल्यू को उठाना है. दैट द लॉजिक यू मस्ट राइट. आर यू गेटिंग? यस सर. सर उसके जो भी आया एक्स वाई जेड, सर कुछ भी आए, उसके बाद मुझे वैलिडेट करना है. द आईडी को उठाना है, दोनों को कॉन्केटेनेट करना है, ये मैपिंग करना है, जोड़ना है इसको. इसको x, इसको y. ये y होने से पहले इसको पहले 0 इंडेक्स को उठा के लाओ. उसके बाद दोनों को जोड़ दो. सर दोनों जोड़ देने के बाद लेंथ वेरीफाई करो. इट इज 9 और नॉट. हो गया. ये 3 कंसेप्ट यूज होगा. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे सर? रॉ डेटा यार कुछ भी हो सकता है. एंड यूजर हूँ गाइस, मैं लेमैन हूँ. आपको पता है मोबाइल नंबर. आई एम पुअर मैन, आई डोंट नो द मोबाइल नंबर. ये घुसा दिया. तो आपका कोड उतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए गाइस. दिस इज डेटा. स्लाइट मिस्टेक कंप्लीट आई मीन कोलैप्स. आर यू गेटिंग गाइस? सर यहाँ पर क्या करोगे लॉजिक बताओ. दिस सब्सक्राइबर आईडी मस्ट बी न्यूमेरिक बाय नेचर. यू मस्ट डिक्लेयर दिस इज इंटीजर. वेरीफाई पहले करना है टोटल. उसके बाद यहाँ से उठा के 0 इंडेक्स वैल्यू को लाना है, जोड़ने की. ये अगर पूरा इंटीजर है तो गुंजाइश ही नहीं ना सर. यहाँ ए होने के चांसेस ही नहीं. राइट? राइट और Yes, रॉन्ग? sir. Yes, sir. सर यू हैव टू वेरीफाई द लेंथ मस्ट सैटिस्फाई 8. पहले इसको वेरीफाई करना है. कोड मस्ट कंसिस्ट दिस लॉजिक. गाइस ये सब चीज क्या होता है, निकलना पड़ता है दिमाग से. सर ये 8 पहले वेरीफाई होगा. यस, वो भी इंटीजर. उसके बाद ये जोड़ा होगा. जोड़ने के बाद मुझे और एक वैलिडेशन करना है. 9 और स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी जाके मैं एश्योर हो जाऊंगा कि ये इंटीजर ही है. पहले वाला में कैरेक्टर ही घुसा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी Yes, हिसाब से इसको डेटा एनालिस्ट इसी को बोलते हैं. यू हैव टू एनालाइज द डेटा गाइस. जैसे कि लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंट इक्वेशन, वही चीज है. तो लॉजिक इज सर टू इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम यू मस्ट नो द डेटा एंड इट्स नेचर. तभी जाके सर होगा.
And ये हो गया आपका ETL फंक्शन, इसी में आपने यूज करते हो, इसमें सब कुछ बोल दो सर, यही किया हूँ मैं 3 साल से। ओके गाइस, थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि देखो तुमको कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम क्या कोडिंग क्या बताओ, यू हैव टू रिप्रेजेंट सर मैं व्यू सिस्टम पे कहां पर यूज किया सर। अभी सोर्स सिस्टम क्या है, Amazon.com। सोर्स सिस्टम किस हिसाब से स्प्लिट होता है, फंक्शन और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। सर वो क्या होता है, वो पूछेगा तुम्हारा सोर्स सिस्टम क्या होता है, फंक्शन के हिसाब से स्प्लिट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो सर, ये Yes, sir. फंक्शन को फिर से बीच में आ गया फंक्शन। यस, एज्यूम करो Amazon, दिस इज जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, मतलब Amazon.com इज US, Amazon.in is India. They want to verify this is US. The price is going to be determined as dollar. Here, all the data would be in rupees. Whenever it will be loaded here, everything should be displayed as dollar. लिखो कोड बैठ के, एंड जब लोड हो गया सर, डॉलर हो गया समझ लो 80 रिकॉर्ड से, सर यहाँ पर 40 रिकॉर्ड से, तो फिर टोटल काउंट कितना आएगा? हेलो सर, 120। This is the functions of ETL. You have to check the count must be here 120. Are you getting? Hello. Yes, sir. This is nothing but the ETL function. सर ये कोड पे लिखना है, ये कोड पे लिखना है आपको। ये हो गया आपका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर सर, फंक्शन। ओके गाइस, assume the S bank. S bank wants to analyze, I want to verify how many people are using, or phone पे wants to verify सर कितना बंदे पैसा किस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओके, दिस इज योर सिस्टम। इन दिस सिस्टम, तो व्हाट आर द फंक्शंस हियर? हेलो सर, इसका फंक्शन क्या बोल रहे हो, हमको कुछ पता नहीं। वी आर गोइंग टू सेंड द मनी, दिस इज द फंक्शन। सर वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी, यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. दिस इज नथिंग बट इन द फंक्शन, द सेंडिंग मनी कैन बी वाया मोबाइल फोन, दिस इज फंक्शन 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर यानी मोबाइल फोन पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, यस। नेक्स्ट कम्स सर via UPI, perfect, this is function, and via bank transfer, perfect, this is third function. So number fourth is your QR code. So these are the functions of PhonePe. What PhonePe is going to analyze, which system basically the end user are using maximum and why. Okay, now the analytics will start. So this will be considered as the source system. Are you getting my point or not? Hello. Yes. Perfect. अरे फोन पे को काट के पेमेंट सिस्टम अलग डाल दिया जाएगा रिज्यूम पे, तो अप टू डू, दिस इज व्हाट द इंटेलिजेंस इज। भाई मेरे इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? लैपटॉप खोल के कंप्यूटर पे टाइप करना 15 घंटा। साइंटिस्ट आज तक कोई कॉलेज गया नहीं, स्कूल तो छोड़ो गाइस, सेकंड क्लास थर्ड क्लास पढ़ के साइंटिस्ट हो। यू मस्ट नो द फंडामेंटल गाइस। सर दिस इज वेयर हाउस, यस, these are the functions. What the system is going to analyze here, which server basically the end user are using maximum, mobile phone. Okay, why? Easiest way to transact. When the end user is going to transact this money, sir, it is 90%. Okay, then the end user when he is going to open the system, the mobile number should be displayed as the very initial stage. सर ये भी बिजनेस है, तो इसी को बिजनेस बोलते हैं गाइस। ये मैसेज लर्निंग हर सिस्टम पे गाइस, मैसेज लर्निंग इंप्लीमेंट हो गया हर सिस्टम पे।
OLX देखो गाइस, उसमें भी मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट हो गया। एंड यूजर किस टाइप के प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, क्योंकि इट इज सर स्पेशल फंक्शन इज सेकंड क्लास, यस सेकंड हैंड प्रोडक्ट, इस चीज को ढूंढ रहा है तो OLX आप पॉपअप करेगा कि आपने हमेशा ये ढूंढ रहे हो। सर नेक्स्ट कैटेगरी इज 60% people are transferring the via UPI, so UPI must be placed in the second place. Are you getting? सर रैंडमली नहीं बैठाते, ऐसा नहीं है। So this is nothing but the logic. And यानी सर एंड यूजर का आई कैचिंग पहले पॉइंट पे जाएगा मोबाइल, अगर नहीं हुआ तो फिर सेकंड, नहीं हुआ थर्ड, फोर्थ। दैट इज योर साइंस। तो इसी तरीके से आपको बोलना है, यानी सर फंक्शन में स्प्लिट हो सकता है, यस फंक्शन में स्प्लिट हो सकता है सर, और एक है जियोग्राफिकल। तो जो भी सिस्टम आपको पढ़ाया गया उसी का सोर्स सिस्टम इजीली यू कैन टेल। आई विल टेल यू गाइस व्हाट आर द सोर्स सिस्टम, जस्ट नोट इट डाउन। अगर पेमेंट सिस्टम डाला गया तो टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं फंक्शंस, किसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, क्रेडिट कार्ड, यस दैट इज वन सिस्टम, सोर्स सिस्टम। सर डेबिट कार्ड, यस दैट इज अनदर सोर्स सिस्टम। टू सोर्स सिस्टम काफी है, इतने बोल दो। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, तो sir. ये आपको स्मार्टली बोलना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं रहता है। तो बोलेंगे तुम सोर्स सिस्टम के, और ETL पे वो लोग वीक रहते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, आपका 2% भी वो समझते नहीं है। इट इज अ फ्रेमवर्क, आप फ्रेमवर्क अच्छी तरह पढ़ो सर। ETL कंप्लीट, उसी के ऊपर आगे जाएगा बिग डाटा, पढ़ो। दिस द फ्रेमवर्क गाइस। सर फ्रेमवर्क समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, बस उसी को जोड़ के आगे जाके बोलना है। कटिंग? चलो गाइस, थैंक्स। ETL थोड़ा ठीक से पढ़ो, और उसमें काम क्या होता है कल कोड लिखेंगे होगा तो आपको, ताकि आइडिया आ जाए कि सर क्या एक्चुअली हमने कर रहे हैं। उसको बोलना है बेसिकली आई हैव इन्वॉल्व इन बैक एंड ऑटोमेशन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। लाइवली कोड कर लिख लेंगे, डेटा लेंगे अमेजोन से, डालेंगे, डालने के बाद लिखेंगे, खत्म। छोटा सा गाइस सीख लोगे ना तो फिर आइडिया आ जाता है, सर मैं यही चीज कर रहा हूँ, अंदर पे बोल दूंगा, तो भूलना होता है। ओके चलो गाइस, थैंक्स। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो? No, sir, no questions. Thank you. No, sir. तो फिर तैयारी रहो 10 दिन के अंदर, और बैठोगे गाइस, डिले करोगे ना सर, हर चीज डिले हो ही जाता है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, किंतु देखो रियल टाइम में जब फेस करोगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। एक दो इंटरव्यू जाने के बाद कॉन्फिडेंट आ जाता है। फोकस ऑन द सिस्टम एंड योर पाइथन। सर उसके बाद डेटा साइंस कहाँ, वो यही क्वेश्चन रट्टा मार के पूछेंगे कहाँ पर यूज किया। तो हमेशा याद रखो एक जगह कभी काम नहीं होता है, सब काम मिलके होता है। स्पेसिफिक एरिया में आपको बोलना है कि सर मैं कहाँ पर अभी इन्वॉल्वमेंट हूँ। अगर मशीन लर्निंग स्ट्रांग हो तो बोल सकते हैं कि सर बेसिकली आई एम यूजिंग फॉर प्रेडिक्टिव मॉडल, वी आर यूजिंग प्रेडिक्टिव मॉडल पे आपका सिस्टम में कौन सा चीज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। सर मतलब आप यूज करते हो, समझ लो सर ई कॉमर्स, तो उसमें क्या प्रेडिक्शन होता है सर, कस्टमर बिहेवियर और नीड टू प्रेडिक्ट, ऐसे बोलना है सर। बेसिकली दिस प्रोजेक्ट डील्स विद द e-commerce vertical. Sir, in this basically what we are going to check the behavior of the customer. I mean number of times he visit, and what are the product type he purchase, the amount he spend, number of time he visits the website. So these are the data basically we are going to analyze, and sir we are going to implement the behavior of the customer. That is predictive model we are using. खत्म सर, एक लाइन बोलना है, वो लॉजिकली मैप होना चाहिए वो चीज के साथ। कहाँ पर यूज कर रहा है, फ्रेमवर्क क्या यूज करते हो, वो पता नहीं सर, एल्गोरिदम क्या यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, सर यही पूछते हैं। आप एक बार एक इंटरव्यू दो और मेरे को बोलो। अगर उनको पहला कम्युनिकेशन सही नहीं लगा तो फिर वो जान लेंगे कि नो गाइस इज नॉट मैच्योर्ड एनफ, तो उसके बाद उन्होंने अटैक करते हैं।
अटैक कैसे करेंगे सर? नाम पाए कौन सा वर्डसन यूज करते हो सर, ये क्या करते हो, क्या करते हो, दुनिया भर का लबड़ा क्वेश्चन पूछते हैं और आपको लगेगा शायद यही इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन वो नहीं रहता है, स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन विद इन वेरी फर्स्ट 5 minutes. The first 5 minutes will determine your path of your next phase. सर फर्स्ट 5 मिनट तो फर्स्ट 5 मिनट को टारगेट करो। ओके, आपको लगेगा कि सर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन मार रहा है और मुझे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जावा किया क्या, अरे भाई जावा क्यों चाहिए? आपको लगेगा ये क्वेश्चन नहीं है, ये वो चाहता है कि यू आउट फ्रॉम द सिस्टम, आई डोंट वांट यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बोलोगे सर मेरे को ना जावा पूछा, मेरे को डाटा स्ट्रक्चर पूछा। वो इसलिए पूछा क्योंकि उसको पहला क्वेश्चन सही तरह आंसर नहीं मिला, जो चीज वो एक्सपेक्ट करता है। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इसको sir. थोड़ा ध्यान दो सर, कहाँ से गाड़ी स्टार्ट करना है। अगर पहला क्वेश्चन सही हो गया ना गाइस, उसके बाद गाड़ी चलता है रॉकेट जैसा। ठीक है गाइस, चलो गुड लक। Yes, thank you, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, हेलो sir. सर, हेलो Thank हेलो you, sir. Bye. sir. लोग Good कोई night. पूछ रहा है क्या? नहीं सर, ये शीट्स मिल सकती है क्या हमें हाँ रिवीजन के क्यों लिए? ना। अरे इसको लिख के रखा क्या आपने? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नहीं लिख सर, के रखा लिखा क्या? तो है। हाँ इसलिए मैं पहला दिन कल ही बोला था इसको लिख के रखो, ये बहुत काम का चीज है गाइस। इसको खाली इंग्लिश में रट्टा मारना और बिजनेस में बोलना है। इसको अभी देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा कसम से। मेरे को क्या करना है, कंट्रोल C करके मैं दे देता हूँ, लास्ट में इसको शेयर कर दूंगा। फर्स्ट यू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। यस ओके, सर, यस। चलो ओके गाइस, सर, थैंक्स, बाय। थैंक सर यू। वो फोन पे का 2 मिनट में रिवाइज कर सकते थे? मैं कल समझा दूं, क्योंकि वो ठीक थोड़ा है सर। एक बार नहीं होता है, बार बार होगा सिस्टम सर, बार बार पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। कोई भी सोर्स सिस्टम स्प्लिट कैसे होता है, तो किस हिसाब से स्प्लिट होता है? फंक्शन, सेकेंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। सर्वर इंडिया में है क्या अमेरिका में, तो 2 सर्वर हो गए सर। फंक्शन वाइज स्प्लिट भी होता है, जैसे कि फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, ट्रांजेक्शन किस किस पे होता है? आपका इस पे होता है बैंक ट्रांजेक्शन, क्यूआर कोड सर, मोबाइल नंबर, 4 सिस्टम से डेटा ट्रांजेक्शन होता है। दिस आर द सोर्स सिस्टम। यस सर। तो इसी हिसाब से सर स्प्लिट होता है। एज्यूम सर ये एप्लीकेशन पे कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर समझ लो सर प्रोडक्ट इंडिविजुअल ढूंढ रहा है। 2 टाइप का प्रोडक्ट इनके पास है ऑलरेडी, समझ लो 2 टाइप का प्रोडक्ट टाइप है, 4 टाइप का। इलेक्ट्रॉनिक्स सर, उसके बाद ऑटोमोबाइल सर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, टेलीकॉम प्रोडक्ट सर। 4 रेडियो बटन, यस। दिस 4 will be known as functions and this 4 will be the warehouse for this system। समझ में आ रहा है क्या गाइस? कोई समझ में आ रहा है स्प्लिटिंग कहाँ से होता है, कैसे होता है? और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक जोन पे सर, मैन्युफैक्चरिंग जोन पे, ये गेटिंग गेटिंग और नॉट। सोर्स सिस्टम को कैसे स्प्लिट करते हो समझ गया तो ईटीएल पे मार्क हो जाएगा सर, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। कल देखो, कल कोडिंग करेंगे सर, कल इसको सीखेंगे कि एक्चुअल ईटीएल फंक्शन पे सर हम करते क्या है। हमको लाइवली एक सिनेरियो लेंगे, इसी इसी सिनेरियो को ले लेते हैं guys। सर इसको लाइवली कोड लिखेंगे, किस तरीका से एग्जीक्यूट होता है, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। पूरा फंक्शन को ऑटोमाइज कर देंगे और यही चीज को हम बिजनेस में बोलेंगे। यहाँ नहीं हो, ये लॉट 50 रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट सिंपल सर, दिस इज डेटा वेयरहाउसिंग और बिग डेटा। डेटा विल बी कलेक्टेड इन CSV और JSON एंड वी आर गोइंग टू पुल द डेटा टू द चैम्बर। चैम्बर कहाँ पर है? आइडियल को लेकर इसके, दैट इज फाइल हैंडलिंग, वहां पर लॉजिक लिखा जाएगा। पूरा मिलियन डेटा को उन्होंने ऑटोमाइज करे।
चलो गाइस, थैंक्स। Okay, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. हाँ गाइस। अच्छा लिंक राशियो है लिंक राशियो राइट राइट